So, are you interested to share a slide or not? You are interested to share slide or not? You can tell me. Slide. हाँ? नहीं, बहुत लोग जो है वो क्या कहता है उस पे कुछ कुछ लिखता है, तो मैं उसमें डिस्टर्ब होता हूँ। तो इसलिए क्या है कि इट मस्ट बी फॉलो द decorum of the class, so that I am also not disturbed and your classmate may also not disturb. So I am listing total 14 students are actually attending the class today. Another so we are discussing about different type of defects in the cheese, and we have already discussed the importance of moisture in the cheese. When we keep the moisture in excessive amount in the cheese curd, we are getting numerous type of defects. We have already tell you but at the same time, when we get the lower moisture content in the cheese curd, simultaneously we will getting the different defects in the cheese. We have already discussed, but once again summarize the facts, see how we can actually optimize the moisture content in the cheese. For controlling the moisture content, स्लाइड शेयर कीजिए सर, आवाज फंस के आ रहा है, कट के आ रहा है। आवाज कट के आ रहा है कैसे? तो स्लाइड ही शेयर कर दीजिए। स्लाइड शेयर करूं? ठीक है, देखते हैं। मैं तो स्लाइड तो देख ही नहीं रहा था अभी। तो 14 पार्टिसिपेंट्स तो है, ये कहाँ गया? बाकी दिख नहीं रहा है कोई? बाकी लोग कहाँ गया? स्लाइड शेयर करूँ ना? हाँ नहीं भी करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम तो सब डिटेल उसका बता ही रहे हैं। मैं देखता हूँ कहाँ से हो सकता है। सर, सबसे महंगा चीज कौन सा है? चीज जिस चीज में है तो अच्छा। सबसे ज्यादा रैपनिंग पीरियड इन्वॉल्व होगा, वो चीज स्वाभाविक है कि सबसे कॉस्टली होगा, बिकॉज रैपनिंग इज एक्चुअली एड टू द कॉस्ट ऑफ द चीज मैन्युफैक्चर, है ना? तो जितना ज्यादा कौन वाला बोले सर? जो जितना ज्यादा रैपन होगा उतना ज्यादा उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना? परमेशन चीज सर, परमेशन चीज सो एक्सपेंसिव है, सबसे महंगा है। हाँ, परमेशन चीज इज द हाई, हाँ वही है, सबसे वेरी हार्ड चीज, and that is actually consumed in Italy mostly and some other European country also, but it is originated in Italy. Parmesan cheese, it requires more than 12 months of ripening, है ना? But you are मैक्सिमम किसी but you have to not study क्या कहता है Parmesan cheese, but I will try to। सर बोल रहे थे सर मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना मैक्सिमम हो सकता है राइपनिंग के लिए? कितना हो सकता है? हाँ, कितना मैक्सिमम? हाँ, तो वो 1 ईयर है परमाशन चीज के लिए। जैसे कल हम वही सर मैक्सिमम है। हाँ, 1 साल 1.5 साल भी रख सकते हो, जितना पुराना, लेकिन एक सीमा के बाद है। सो वो अब तुमको बताया था ना कि व्हाट आर द चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग रैपनिंग ऑफ चीज, ये तो तुम्हें असाइनमेंट भी लिखना है, लेकिन हमने बताया था ना
when we keep the cheese for a longer period, है ना, then there may be chances of there may definitely chances of loss of moisture in the cheese, which ultimately leads to the defects of which is called crumbly defect. Crumbly defect, which is also you observe in case of paneer also, but here we can get due to loss of moisture during ripening, crumbly defect may be appear, है ना. So we are actually discussing different defects. We are most concentrated today about the moisture content of cheese. First of all, जैसे in case of cheddar cheese, we are generally adjusting the CF ratio in the range of 0.7. In case of cow milk, है ना. But when we are using buffalo milk, if you are not adjusting any casein fat ratio, then the moisture retention in the curd will be very less due to क्योंकि मैक्सिमम है तो जो कर्ड बनता है बफेलो मिल्क से वो हार्ड फर्म बनता है और उसमें मॉइस्चर रिटेंशन भी सिनेरेसिस भी अधिक होती है, जिसके चलते मॉइस्चर रिटेंशन भी कम होता है. तो हाउ वी कैन एक्चुअली इंप्रूव द मॉइस्चर कंटेंट इन केस ऑफ बफेलो मिल्क? So we are adjusting the casein fat ratio in the range of 0.69 to 0.7, है ना. casein fat ratio ही adjust करते हैं, तो उसमें क्या होता है, we can actually able to retain some moisture content in the cheese. In other aspect I have also discussed today that heat treatment, that is pasteurization. Generally in case of cow milk, we are keeping the temperature 71 degrees centigrade, 72 degrees centigrade, 15 seconds to pasteurize the cheese milk. But in case of buffalo milk, we are actually keeping the relatively higher temperature in the case of buffalo milk, and holding time is higher, so that we can actually retain more moisture content in the cheese. But we must be conscious about when we give higher moisture temperature, have a higher temperature and holding time also, then the moisture content may be excessive, which leads to be the different defects of the cheese. So we have to control the moisture content in the cheese also. So we are actually discussing this aspect. Another one is in case of cow milk, we are getting soft curd, if we are not additing calcium chloride in the cheese milk, which is going to be manufactured for either for Gouda or cheddar. तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, we are generally adding calcium chloride, है ना, so that we can rise the or maintain the calcium content in the milk, which is actually required for proper coagulating by rennet, है ना. So if we add the requisite amount, that is 0.02% calcium chloride, then we can get the firmness which is required for the cheese, even in cheddar cheese or Gouda cheese also. So we can also improve. Another one is starter culture. If we add, yesterday I have told you that in case of cow milk, we are adding a starter culture at the rate of 0.6%. Itna 0.8% or 1% of the cheese milk. But in case of buffalo milk, we are advocating higher concentration of a starter culture, that is 1.5% of the cheese milk, so that we can actually improve the moisture level content in the milk. Another aspect is that when we add higher concentration of starter culture, that will actually also help to minimize the buffering capacity of buffer milk, so that when we keep the cheese blocks in the ripening, so that culture will be very effective, because we are retaining more moisture when we add higher amount of starter culture. But when we not control the starter culture at adequate amount, then that leads to the different defects in the cheese. So we are generally advocating or suggesting addition of 1.5% of starter culture in case of buffalo milk. Two type of culture, I have already told you, the two type of culture
are actually adding. One is mesophilic culture, another one is yogurt culture, that is thermophilic culture, that is used for yogurt also. So these two culture at different temperature, जैसे हमने स्टार्टर कल्चर अगर यूज करना मेसोफिलिक वाला, तो दही कल्चर जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, स्ट्रेप्टोक्लिमोरिस, यू कैन ऐड. And in case of yogurt culture, or that is cheese, another cheese culture which is thermophilic in nature, that is Lactobacillus bulgaricus and Lactobacillus thermophilus. These two are actually added at the temperature of 46-47 degrees centigrade to the cheese milk. Even you add 42 degrees centigrade to the cheese milk. So that is actually depending upon the culturability and the rate of addition of starter culture. In both the cases, both the culture, we are actually adding a starter culture at the rate of 1.5% in case of buffalo milk, whereas in case of cow milk, we are adding 1% of a starter culture, which will be the enough. Now comes into the next stage, that is addition of rennet. Addition of rennet. All the rennet, I have already discussed what type of rennet is actually available and how we can actually produce the quality of milk. Just yesterday we have discussed preparation of Gouda cheese. If we are using calf rennet, what modification is needed when we are making Gouda cheese from buffalo milk with calf rennet, or using microbial rennet, or using mixed milk also. Even we have also discussed studied that supplementation of some extent of goat milk to cow milk or even buffalo milk, we can actually getting the almost same behavior characteristic flavor in the buffalo cheese also. Buffalo cheese, cheddar cheese or Gouda cheese. In case of Gouda cheese, you have also, some worker has suggested, if we dilute the milk up to 10 to 15% of the total milk, then we can also improve the intrinsic behavior of buffalo milk. That means the moisture retention in the milk will be higher, which actually affect or regulate the behavior of the buffalo milk, and which is almost behave like a cow milk. So these are the aspects. Another one is another treatments we have also lactofugation. Lactofugation already discussed. वो क्या करता है, कौन सा डिफेक्ट, जो ब्लोइंग डिफेक्ट है, लेट ब्लोइंग डिफेक्ट, अर्ली ब्लोइंग डिफेक्ट, उसको चेक करने में जो स्पोर्ट से रिलेटेड है, वो डिफेक्ट को वो निश्चित रूप से कंट्रोल करता है, जो कि चीज में चाहे गौडा चीज हो चाहे चेडार चीज हो, दोनों में वो आता है. और हमने गौडा चीज में ये भी बताया था कि वी आर एडवोकेटिंग द यूज ऑफ KNO3, है ना, पोटासियम नाइट्रेट, है ना, सो दैट वी कैन also overcome the defects of Gouda cheese, है ना. तो उसमें हमने बताया था कि if we are not control the amount of potassium nitrate, that is actually converted into nitrite, and under SD condition वो क्या करता है, they are react with the amines and they are making cancerogenic compound nitrosomes, है ना, that is actually cancerogenic in nature. So when we add potassium nitrate, है ना, because Scott has recommended addition of potassium nitrate, है ना, to control the defect, glowing defect in the cheese. तो उसने ऐसा सजेस्ट किया था, तो उसका लेकिन हमको बहुत ही बैलेंस रूप में उसको कंट्रोल करना है. अब मैं बात करूं तो उसके बाद हमने बताया था कि होमोजेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, बाय द, ये भी है सो सब्स्टिट्यूट, ये इसेंशियल नहीं है चीज मेकिंग में, बट इन केस ऑफ बफेलो मिल्क, when we are advocating or we are implying homogenization, then the moisture retention in the curd will be improved. That is, moisture retention will be improved, and the yield of cheese is also improved. Both are improved, but there may release of some free fatty acid that may lead to the oxidized flavor or even rancid flavor to the cheese when we are not control the other parameter properly.
ये phosphorylation का ये even we are ऐसे also using microfiltration. What is the also how we can actually use microfiltration? That is the same way we are actually removing the maximum microbacteria from the milk. That is the just like bacteriophagocytation. Here we can also eliminate the most of the bacteria from the milk, है ना. तो इससे भी हम लोग कंट्रोल करते हैं. माइक्रोफिल्ट्रेशन नाम से ही पता चलता है कि माइक्रोफिल्ट्रेशन मतलब जो भी सूक्ष्म जीवाणु है उसको हम कहाँ तक इससे रिमूव कर सकते हैं. इसके अलावा मैंने जो ये बॉडी एंड टेक्सचर से संबंधित फिर मैंने बताया था स्टैंडर्डाइज करने का अलग अलग जो दूध है अलग अलग करना है. अब जैसे हम सीप मिल्क से बनाना है तो सीप मिल्क से व्हाइट ब्रांड बनना है तो वो सीप मिल्क से बनेगा तो 6% फैट के अनुसार बनेगा. बट व्हेन वी प्रिपेयर फ्रॉम काउ मिल्क देन the modification is must. Modification in casein fat ratio or level of fat should be adjusted so that we can because the higher content of fat is there. So cow milk generally contains 4% of fat, 4.5. So we can have to increase the level of fat in the milk so that we can get the some flavoring compound, fat compounds. We are actually precursor of fat soluble flavors. So that is keep into the mind. So we can actually improve the flavor, improve the behavior of the cow milk to get the somewhat nearer to the flavoring compound what we get from the seed. उसी तरह से हमने और सब चीज का. तो अगर हम डिफेक्ट की बात करें बॉडी एंड टेक्सचर के रूप में तो कौन कौन सा हुआ, कौन कौन डिफेक्ट हो गया. जो हमारा अगर तुम्हें कहा जाए कि विच आर द डिफेक्ट तो उसमें हम लोग का कौन कौन आ जाएगा डिफेक्ट. एक तो आ जाएगा कॉर्की और कॉर्टिकर्ड. कॉर्टिकर्ड में क्या हुआ बताए ना, जिसमें क्या होगा कि अगर हमारा चीज का हमारा मॉइस्चर रिटेंशन बहुत कम होगा तो कर्ड कैसा होगा, फैट कम होगा. या बहुत सारे चीज बना रहे हैं उसमें फैट लो फैट चीज भी आ रहा है मार्केट में, तो अगर हम फैट कम करेंगे तो क्या होगा, वो कॉर्की होगा. वन ऑफ द डिफेक्ट इज कॉर्की, अनदर वन इज हार्ड. और मैंने क्या बताया था दूसरा डिफेक्ट, क्रम्बली हो सकता है जस्ट आफ्टर मैन्युफैक्चर इफ देर इज एनी मतलब lapses in method of manufacture of cheese, crumbly behavior may be occurs, particularly in case of buffalo milk, है ना. तो क्रम्बली और क्या हो सकता है, जब हम राइपनिंग रूम में when we keep the curd in the ripening room, then due to loss of moisture after 3 months, when the cheese is actually comes into the market or even for preparation of processed cheese, then you can get that the cheese becomes crumbly. So one of the major other defects is crumbly, corky, hard, dry. These are the defects. उसके अलावा होगा रबरी डिफेक्ट. रबरी किसमें आएगा, काउ मिल्क से. अगर बफेलो मिल्क से when we prepare cheese from buffalo milk, then the rubbery texture will be appear, है ना. तो that is why we are actually advocating the standardization of milk of the buffalo milk so that behavior can be changed and resemble like cow milk. So these are the how we can actually improve. Another rubbery defects का और क्या कारण है, they are low acid development in the cheese. रबरी कैसे और हो सकता है, when we are adding less amount of starter culture या the culture added to the cheese milk is the activity of starter culture is very poor. जैसे मैंने बताया था क्लास में भी कि स्टार्टर कल्चर जो है अगर हम ऐड कर रहे हैं ठीक है 1.5% के रेट से, बट देयर एक्टिविटी इज नॉट 90%, देन अगर हम उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं तो उसकी एक्टिविटी अगर मान लो कि 70% आती है ना, तो हमारा क्या होगा कि जो कल्चर है दैट इज नॉट सूटेड फॉर चीज मैन्युफैक्चर. दैट इज व्हाई बिफोर एडिंग टू द चीज मिल्क वी आर एक्चुअली असेसिंग द starter culture activity of the curd. Sorry. So before adding to the cheese milk, we are actually checking the activity test of a starter culture.
एक्टिविटी टेस्ट कैसे करते हैं? आई विल गिव यू इन प्रैक्टिकल ऑल्सो, आई विल गिव यू मटेरियल टुडे सो दैट यू कैन राइट इन द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। कैसे करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। पहले इसको पूछ लेना, मैं जस्ट उसको बता देता हूँ कि व्हाट आर ऑल द बॉडी डिफेक्ट्स, क्या होता है चीज में। उसके अलावा होता है, तुम देखे होगे कि ग्रीसी टेक्सचर हो जाता है ना। समटाइम्स चीज बिकम द सरफेस इज जस्ट लाइक ग्रीसी। वो कैसे होगा तो तुम समझ सकते हो। इफ वी आर without, suppose we prepare milk from buffalo milk and we are even making the cheese from cow milk, but with the fat content is higher amount, तो क्या होगा कि ग्रीसी टेक्सचर जो है, हायर फैट कंटेंट अगर चीज मिल्क में है तो दैट गिव्स यू ग्रीसी टेक्सचर, दे में गिव यू ग्रीसी टेक्सचर डिफेक्ट इन द चीज। और इसके अलावा क्या होगा, एक मीली और साल्वी डिफेक्ट होता है। नीली और साल्वी डिफेक्ट वो क्या करता है, आई एम शेयरिंग यू। नीलिंग और साल्वी डिफेक्ट क्या होता है, सालिक डिफेक्ट क्या होता है, उसमें क्या होता है कि एक्सेसिव एसिड डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, एक्सेसिव एसिड डेवलपमेंट होता है चीज कर्ड में। इसके बाद हमारा एक वन ऑफ द डिफेक्ट है वो पेस्टी है। पेस्टी तो वो हमने बताया कि एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट अगर चीज में होगा तो देन द कर्ड, देन द चीज विल become pasty, so which is not desirable. And another defect is soft or weak curd. If we are maintaining higher content of fat, then if we are maintaining higher content of fat, then the pasty defect may be appear. And a weak body or soft, that will also appear due to higher content of moisture in the cheese. So these are the body defect. और टेक्सचर डिफेक्ट में क्या होगा, तुम जो सुनते होगे कि माने फिश आई बन गया या ईस्ट होल बन गया या पिन होल्स बन गया। जैसे तुम सुने होगे कि गौडा चीज में शाइनी अपीयरेंस और गैस होल्स है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दैट इज नॉट ए डिफेक्ट ऑफ गौडा चीज, बट इन केस ऑफ सम चीजेस है ना, इन चिडार चीज, देन वी आर गेटिंग फिश आई एंड ईस्ट पिन होल्स or gassy holes. That is not acceptable in the case of cheddar cheese. But in case of Gouda cheese, some shiny or small gas holes, pin holes is actually desirable in case of Gouda cheese. So these are the defects. And another one is mechanical holes. Mechanical holes may be appear particularly in the case of cheddar cheese. You have one of the parameter which is actually involved in the case of cheddar cheese is cheddaring. है ना, cheddaring process which comprises piling, repiling of the curd, है ना। So this process is specific for cheddar cheese. This type of defect is not appear in the Gouda cheese. So mechanical holes may be appear due to not proper application of cheddaring of the curd for cheddar cheese making. So these are the defects which causes in the cheddar. Or another one is short holes or Swiss holes. Swiss holes, you know very well that in case of Swiss cheese, I will discuss later. In the case of Swiss cheese, gas formation, gassy formation or eye formation is desirable in case of Swiss cheese. And with the starter culture, we are also adding what adding? We are adding Propionibacteria cerevisiae, so that we can get the characteristics eye holes in the Swiss cheese. That is desirable in Swiss cheese. But in case of suppose cheddar cheese में अगर आ गया इस तरह का हो, इस तरह का, तो that is not desirable. This is one of the major defects in the cheddar cheese. So these are the defects with respect to body and texture of the cheese curd. And now we are comes to the flavor defect of the cheese. There are so many defects we are already here. Number one, high acid or sour. एक आता है चीज में क्या होता है कि हाई एसिड और सावर आ जाएगा, तो उससे क्या होगा
कि जो सावर आएगा क्यों आएगा, तो उसमें होगा कि अगर हम जो चीज जो दूध यूज किए हैं वो डेवलप एसिडिटी उसमें बहुत ज्यादा था, और या हमने स्टार्टर कल्चर बहुत ज्यादा मात्रा में ऐड किया, दैट इज सपोज इन केस ऑफ काउ मिल्क वी आर आल्सो एडिंग द स्टार्टर कल्चर एट द रेट ऑफ 1.5 जनरली यूज फॉर काउ मिल्क, है ना, बट इन केस ऑफ काउ मिल्क व्हेन वी आर एडिंग 1.5% ऑफ स्टार्टर कल्चर to the cheese milk, then the cheese becomes sour, है ना. In early stage of ripening you get the sour flavor or acidic flavor in the cheese. Another one of the major defect in cheese is क्या है, bitterness in cheese. Bitterness in cheese may be appear, क्यों होगा वो, when we apply low quality of milk, है ना, when the milk is actually affected, or when we prepare cheese from static milk, abnormal milk, or any other milk, but when any type of immunity is present in the milk, then the starter culture cannot be grow at desirable rate. So if milk quality is poor, then initially we have to check the test whatever given in the case of cheese, whatever I have teach you in the what should be the quality of milk in the for the cheese making. Either वो, तो इस तरह से हम लोग जो है बीटर टेस्ट और कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें और भी क्या है कि वी आर यूजिंग लो क्वालिटी स्टार्टर कल्चर. अगर स्टार्टर कल्चर हम लोग लो क्वालिटी में किए, उसका रेट ऑफ एसिडेशन फास्ट नहीं है, स्टडी नहीं है, तो उस केस में भी बिटरनेस आ सकता है ना. तो दीज आर द डिफेक्ट. अनदर वन इज मोल्डी डिफेक्ट. मोल्डी डिफेक्ट इज प्रेजेंट, कैसे होगा तुम जानते हो कि ईस्ट में जैसे ही ईस्ट तो मतलब क्या करता है, हाइड्रिक हो जाता है कर्ड, तो उस क्या करता है, दैट फेवर द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स. तो मोल्ड्स अगर ग्रोथ होगा तो दे आर रिलीजिंग प्रोटीजेस, लाइपेजेस, एंजाइम्स, एंड दे आर एक्चुअली ब्रेक डाउन द डिफरेंट प्रोटीन्स एंड which leads to the defect in the cheese due to the moldy. This is known as moldy flavor. Moldy flavor आ सकता है due to incorrect condition of curing or storage or even unsanitary condition applied for the manufacture of cheese. So these are the defects with respect to flavor. Even we are here see you different type of color defect. Color defect we are seeing you in the slide. हाँ, these are the color defect. Acid cut दिख रहा है, acid cut, one of the major defect in cheese. Acid cut means excessive amount of acidity. Another one is black discoloration. That black discoloration means presence of minute traces of lead coming from the paint. Another is bleach color. Bleach color is due to the action of organism Bacillus subtilis and Bacillus fluorescens. Another color defect is molted color defect. This may be appear due to mixing of curd from tube hats, lumpy starter, uneven development of acidity and moisture, adding starter after color, or improper salting may lead to the molted defect in the case of cheddar cheese or even Gouda cheese. Rusty spot, presence of anaerobic lactic acid bacteria may create rusty spot defect in the cheese. So these are the defects which actually appear in the cheese. Another one is rin rot defect. Rin rot defect, which is due to the excessive acidity of the cheese curd, or they can, due to excessive moisture, we can keep the cheese into the cheese ripening room. Another defect with respect to finished and appearance of the cheese is cracked paraffin. है ना. क्रैक्ड पैराफिन का मतलब क्या है कि जो चीज में कोटिंग होता है उसका थिकनेस है सो अगर अधिक हो गया तो उसमें है सो क्रैक्ड पैराफिन डिफेक्ट अपीयर हो जाता है. स्कैल्टी पैराफिन कैसे होगा? इफ वी
कोटिंग द चीज इनसफिशियंट, मतलब जो पैराफिनिंग करते हैं हम लोग चीज ब्लॉक को, खास करके जो गौड़ा चीज और इसमें चेडार चीज में, तो उसमें थिकनेस जो होता है वो इनसफिशियंट होता है, तो उसके चलते भी स्केली पैराफिन डिफेक्ट आता है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है डिफेक्ट डिफरेंट चीज का हम लोग है सो स्टडी किए इसमें। और जहां तक जैसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका कि कैसे है, और इसका प्रिवेंटिव मेजर हम क्या लेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें। और बीटर डिफेक्ट का ऑलरेडी हाई also how we can control the acid development in the cheese. We always prefer good quality milk. We always prefer quality starter culture. Quality starter culture means the starter activity should be more than 90%. Anna, similarly, the moisture in the cheese and salt in moisture content in the cheese must be optimum, so that the starter culture activity and the rennet used for cheese manufacture will collectively active for characteristic flavor in the cheese. So if the concentration of starter culture will be low, then bitterness will be appear in the cheese. So these are the few things by which we can actually study the different type of defect in the cheese. अब देखो तुम लोग स्लाइड शेयर करने नहीं देते हो। इस तरह से तुम लोग कितने लोग हो आज? और इसके बाद सुनो, ये मैं न्यूमेरिकल क्या व्हाट्सएप पे भेज दूं बना करके, कि उसको मतलब यहाँ पे कैसे देखोगे? विकास यस सर। हाँ, ये एक्चुअली आई वांट टू गिव यू न्यूमेरिकल्स। क्या मैं उसको क्या कहता है व्हाट्सएप पे भेज दूं, और उसको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना है समझ करके। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको हम क्या कहता है क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे कैसे करें, या फिर इसमें देखते हैं इसमें आ जाएगा। अच्छा, मैं व्हाट्सएप से सुनो, अगर मैं व्हाट्सएप से भेजूं, तुम लोग व्हाट्सएप से भेजता हूं, अगर समझ में आ रही है, व्हाट्सएप से न्यूमेरिकल सॉल्व करके भेजता हूं। यस सर, बोलिए ना सर। हाँ, तो व्हाट्सएप से अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करके भेजता हूं तो वो क्या इसमें दिख सकता है? जैसे एक क्वेश्चन यस सर, मोबाइल शेयर से डायरेक्ट दिख जाएगा सर। अच्छा, मोबाइल से डायरेक्ट शेयर हो सकता है सर। मोबाइल से मैं बना करके उसमें डाल दूं ग्रुप में। हाँ, और उससे तुम लोग कॉपी में फिर लिखोगे तो उसको समझ जाओगे ना। जैसे क्या है कि चीज मिल्क में एक्सटर्नाइजेशन ऑफ चीज मेकिंग है, जैसे है ना, मैं ब्रीफली बता देता हूँ। तो उसमें क्या है, जैसे हम और सब न्यूमेरिकल बनाते हैं, इसमें भी जैसे सपोज हमको चेडार चीज बनाना है तो उसमें केजीन फैट रेशियो हमको 0.7 रखना है। तो हमें मान लो 10,000 लीटर दूध मिला है, उसमें फैट और केजीन हमको पता है, और हमको जो है दूध को कन्वर्ट करना है इतना लेवल फैट में। तो या तो हमें कितना अमाउंट ऑफ मिल्क स्किम मिल्क ऐड करना पड़ेगा, या कितना अमाउंट ऑफ क्रीम हमको रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो दीज आर एक्चुअली मेंशन इन द शीट। जस्ट आई एम copy the numerical which I have make it, and you can go through the numericals, you can easily understand उसमें क्या करना है। या अगर हमको SNF निकालना है क्रीम में, तो जो फॉर्मूला हमने बताया था क्रीम में, मार्केट मिल्क में भी उस पर लगा सकते हो। परसेंटेज SNF इन क्रीम इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज फैट इन क्रीम बटा 100 माइनस परसेंटेज फैट इन मिल्क गुने परसेंटेज SNF इन, वो लिख देना है। उसके बाद उससे कैलकुलेट हो गया SNF। उसके बाद फिर तुम बस अर्थमेटिक, सिंपल अर्थमेटिक से कितना अमाउंट है
अलजेब्रिक मेथड से बना सकते हो, और पियर्सन वाला भी अलग से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, मोज़रेला चीज में वो काम आएगा। मोज़रेला चीज में जब हम बनाएंगे जैसे, तो उसमें वो काम आएगा। तो इसको ये न्यूमेरिकल मतलब मैं शेयर कर दूं, यही कह रहे हो ना? यस सर। अच्छा, और इसमें चीज में जो डिफरेंट डिफेक्ट्स है, उसमें और कोई क्वेश्चन पूछना है तुमको तो यू आर वेलकम। ठीक है ना? और टोटल पार्टिसिपेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू राइट, टोटल कितना आया है? फोर्टीन है सर। 14। इसमें साइड कैसे हो गया है? टोटल 14 स्टूडेंट है, कौन एब्सेंट है ये बता सकते हो? 14 स्टूडेंट प्रेजेंट है। हु आर एब्सेंट? विच वन इज एब्सेंट? इसे तो फोटो खींचेंगे तो 4 ही का दिया आएगा। हैं? 14 पार्टिसिपेंट दिखा रहा है ना इसमें? यस सर। लेकिन इसमें तो जो फोटो खींचेंगे अगर, तो उसमें तो 6 ही दिखा रहा था। Today we are actually going to discuss about the different type of defects which is generally occur in the ripened variety of cheese like cheddar cheese, Gouda cheese. So you know already aware, yesterday you are aware about the different method of manufacture involved in manufacture of Gouda cheese, and simultaneously you are also go through the basic reason about all the process involved in the manufacture of Gouda cheese. If you prepare cheese from buffalo milk, you need different modification in the method of manufacture. Otherwise, you cannot able to get the same characteristic flavor as you observe in the cow milk Gouda cheese. So you are go through different process, and you can also see the different additives which is actually added to the cheese to in order to control the different defects in the cheese. So here we are discuss what type of defect generally occurs in the cheese, and also what are the reason behind that, and also how we can actually control the cheese, control the defects in the cheese. Now we come to the most important point which comes into the cheese is defects mostly due to the moisture in the cheese. Anna, moisture has a prominent role in the manufacture of in the Gouda cheese or cheddar cheese. If you control the moisture not in a balanced way, if you are getting the highest moisture content in the cheese curd, you will get the problem with respect to flavor, body and texture, and color defects. While you can also observe if you are not meant, you are lacking moisture content, at the same time you can also observe different type of body defects, texture defects, and even flavor defects and color defects also. So we have to keep attention about the controlling the moisture content in the cheese. So if we give excessive moisture to the cheese curd, what happens? There may be chances of different type of if you getting excessive moisture, that means what it can happen. Generally you can see the process of manufacture. In the process of manufacture, if we are employing higher heat treatment, higher holding temperature, then we can get the higher moisture retention in the cheese curd. Similarly, if you add higher amount of starter culture, rate of starter culture, you can also get the higher moisture content in the cheese. You can also, one of the process is homogenization. Homogenization is also adding
higher moisture retention in the cheese curd, है ना? So these are the simple process by which we can actually retain the higher moisture in the cheese curd. But we have to control the moisture to the desirable level so that we can harass, or we can check the different type of defect in the cheese. So let us discuss how we can actually control these type of defects. जैसे suppose if your cheese is excessive moisture, then flavor may be acidic, or you can getting the less characteristic cheese flavor after ripening or during ripening. Similarly, if the body is weak due to excessive moisture, क्या होगा? Body of cheese curd is weak, and you can get a sticky or pasty texture in the cheese curd when after ripening or after aged, है ना? You can get pasty texture which is not desirable in the cheese. Similarly, the texture, if moisture is excessive, the texture will be open. That means acid माने क्या होगा कि ओपन होने का मतलब क्या है कि ज्यादा अगर टेक्सचर जो हमारा जो कर्ड है ओपन होगा तो क्या होगा? The firmness of curd is very less, and there may be chances of growth of mold, है ना, which actually happens, or defects, different type of cheese. We have further discussed about the different flavor defects in the cheese. So in another way, if we are not controlling, if we are not controlling moisture, or at the same time if moisture retention is less or moisture is less, then what happens? The flavor of the cheese is not up to the mark, because if moisture retention is less in the cheese curd, moisture retention क्या करता है? There retains the क्या करता है वो? That retains the starter culture, that retains the rennet, है ना, that retains the rennet, है ना, which ultimately, है ना, helpful in ripening of the cheese, which leads to different flavor compounds, and which gives the characteristics flavor of the respective varieties of cheese. So less moisture content will also add to the less cheese flavor, है ना? Similarly, with respect to body and texture, if the moisture retention is less, the body of the cheese curd is firmed and it becomes corky, and which not gives you क्या कहता है desirable texture in the cheese. It may be crumbly, है ना? However, when we keep the cheese curd during ripening, and there may be chances of crumbling defect, because due to less moisture content in the cheese during ripening क्या होता है? There may be loss of moisture during ripening of cheese. So crumbly defect may be also occur in cheese which are ripened more than 3 months, 4 months, है ना? So such type of defects may be occur. Similarly, there is a color defect also when we not control the moisture properly. Less moisture retention also hasten the growth of rind rot defect in the cheddar cheese, है ना? रिंड रॉट डिफेक्ट क्या होता है? जैसे पिछले क्लास में भी हमसे शायद ऋषि ने पूछा था, तो उसको बताया था कि रिंड रॉट में क्या होता है, जिस तरह से तुमने ब्रेड होता है ना, ब्रेड के किनारे जो जमा हो जाता है, जब हम चीज को, है ना, जब हम चीज राइपिंग करते हैं तो क्या होता है, उसके किनारे रिंड फॉर्मेशन हो जाता है। वो है सो हो सकता है कि हमारा जो पैराफिनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके चलते भी किनारे वो लग जाता है, और जिसके चलते जो चीज का ब्लॉक है उसके किनारे कलर जो है चेंज हो जाता है, काला हो जाता है, या समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द चीज का। तो वो क्या है, दैट इज अगर हमारा रिंग रॉट है, अगर हम उसको टेस्ट करते हैं तो दैट इज नॉट मतलब सो मच क्या कहता है एक्सेप्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू चीज फ्लेवर।
है ना. तो ये जो है, these are the defects which are may be occur in the cheese. But how we can control? How we can control? One of the methods for controlling the moisture in the cheese is standardization of cheese. I have already told you, for cow milk, we are keeping the casein fat ratio in the range of 0.7, 0.69 to 0.7 in case of cow milk, whereas in case of buffalo milk, we are maintaining the casein fat ratio in the range of 0.68 to 0.69. Similarly, that means when we reduce the fat content in the cheese, there may be less moisture retention in the cheese. Similarly, heat treatment. If we give heat treatment or pasteurization to the cheese milk, then the cheese contains the higher moisture content in the cheese. Even holding temperature is higher, then the retention of moisture will be higher. Similarly, if add higher content of a starter culture in the cheese curd, if we are adding higher content of a starter culture in the cheese curd, then the moisture retention will be more. But when we adding a starter rennet, when we adding rennet in less amount, then the moisture retention will be higher in the cheese curd. When we add higher content of rennet, then the curd will be more firm. Curd will be more firm, and that is why to get the most firmness curd, cow milk is generally advocated or recommended to add calcium chloride to the cheese milk at the rate of 0.02 to 0.03. Whereas in case of buffalo milk, there is no need of additives in terms of calcium chloride, because buffalo milk itself rich in calcium content, which the level of calcium is so high, so they are making the curd as required for the cheese milk. So these are the points we are actually have to discuss, especially with respect to the moisture content. Similarly, cooking of curd. When we keep the cooking temperature higher, we will definitely get the less moisture content in the cheese curd. Similarly, when we are pressing the cheese at different the required temperature and required pressure, if pressure is not proper, then the moisture retention is again high. If we keep the pressure as the recommended level, then the moisture retention will be desirable, and which may not create any type of defects in the cheese with respect to flavor, with respect to body, with respect to color. So that is why that is very much important. Other parameter you can also see. Then one of the method of manufacture of Gouda cheese, you are brining the cheese, brining of cheese curd also. Brining solution is 18% to 20%. When we keep the brine solution up to 26% level, you can observe that the transmission of moisture is stopped. So there may be no chances of any defects in the cheese, because that salt क्यों करते हैं? Salt actually check the growth of putrescent bacteria in cheese, and salt promotes the growth of lactic acid bacteria. If we keep the salt, generally in the case of cheese, cheddar cheese, we are average salt content addition is 1.5. In case of Gouda cheese, brine solution in the range of 18 to 22% is generally recommended. So these are the parameters by which we can actually control the moisture content in the cheese. So now comes into the different type of defects. You can also see here. These are the defect body and body defects. What are the body defects? Cracked paraffin. तुम जानते हो कि after manufacturing of cheddar cheese or even Gouda cheese, before ripening, the cheese curd is actually dipped in a paraffin wax,
Nowadays, paraffining of cheese curd is not done even in NDRA Karnal experimental dairy also, because the basic purpose of paraffining of the cheese curd is to control the moisture content in the cheese block. If moisture content maintained in the cheese block, then the process of degradation of protein, fat, other compounds, which leads to the different flavoring compounds, may occur. So you know that in cheddar cheese, more than 100 compounds, flavoring compounds, are actually responsible for characteristic cheddar flavor in the cheese. But nowadays we are not paraffining the cheese curd. Just we are actually in the high polythene film packing. We are actually vacuum pack of the cheese block, and after packing the cheese block, then we are keep the block in the ripening room, where ripening room temperature is two type of ripening condition we can provide in case of cheddar cheese. Suppose if you keep the cheese block at 0 to 5 degrees centigrade, you can maintain the relative humidity up to you have to maintain relative humidity 75%. Suppose you have accelerate the growth of the cheese flavoring process, you can keep the cheese block at higher curing temperature. Higher curing temperature is generally 12 to 16 degrees centigrade at relative humidity 85 degrees centigrade. But we cannot keep the temperature 12 to 16% more than 1 month. Otherwise, there may be chances of various type of defects, because in cheese flavor development process, we have to control the rate of formation of different flavoring compounds. That is why